This is our 250th module of our course of financial management. And in this module, we'll be talking about the theory of irrelevance, and it is the continuity of our discussion and linked with the previous modules. So far, we have talked about the irrelevance theory, and we have seen that what it is, what does it actually say. लेकिन इस theory पे बहुत सा criticism भी है. आइए इस क्रिटिसिज्म को वन बाय वन देखते हैं. इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हम आने वाले मॉड्यूल्स में मज़ीद डिटेल के साथ एक्सप्लोर भी करेंगे. द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज दैट इफ somebody can make homemade dividend, that might require selling of fractional shares. यानी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डिविडेंड जनरेट करने के लिए हो सकता है कि शेयर होल्डर्स को फ्रैक्शनल शेयर सेल करने पड़े, जो पॉसिबल नहीं होता. जब शेयर सेल किए जाते हैं, जिसको हम कैपिटल गेन से भी ताबीर करते हैं, तो उसके अंदर हमें ब्रोकरेज कमीशन, ब्रोकरेज चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जिससे हमारा रिटर्न रिड्यूस हो जाता है. जब हम अपने शेयर्स में से कुछ शेयर सेल करके अपना होम मेड डिविडेंड बनाने की कोशिश करते हैं, तो उससे शेयर होल्डर की परसेंटेज होल्डिंग कम हो जाती है. और अगर इसी बात को हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ लेके जाएं कि जिनकी परसेंटेज होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, एंड सम केसेस इट मे बी द मेजॉरिटी होल्डिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इन अ कंपनी. अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन यानी कोई म्यूचुअल फंड या बहुत बड़ा बैंक अगर अपने शेयर्स को सेल करके होम मेड डिविडेंड बनाने की कोशिश करेगा, तो उससे उसको बहुत इफेक्ट हो सकता है. इसी तरीके से जो मार्केट के अंदर प्राइस की फ्लक्चुएशन है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन मेनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, एंड इफ दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स डू एग्जिस्ट, देन वी कैन नॉट से that the fluctuation in the market price will only be based on the payment of dividend or retention. अगर किसी और वजह से वो फ्लक्चुएशन हो गई, तो शेयर होल्डर जाहिर है कि उस तरीके से अपने डिविडेंड को खुद नहीं बना सकेंगे. एंड देन the rate of income tax and the capital gain tax are different. Again, this is one point which we'll discuss in more detail later on. There is other criticism also on this irrelevance theory. For example, retained earning, once the profit is reinvested in the business, it has zero cost. हमने profit कमाया और उसको अपने ही business में लगा दिया. But if the company goes for additional financing, it is not free of cost. यानी in addition to the return to shareholders, हमें उसे issue करने, float करने की भी एक cost bear करनी होती है. And also that payment of dividend is something that sells signals, यानी positive और negative signaling भी dividends के साथ relate करती है. There are laws and regulations which restrict investor to go for homemade dividend and the institutions also. And lastly, the non-payment of dividend also increases the lack of trust on the directors, the relationship of the investors and the company's director, it is affected by that. Now let's have a look at a few examples, and these examples would actually tell us that if we are retaining a part of the earnings or we are distributing the part of earnings, जब तक कि हमारा reinvestment rate, यानी अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस में प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर रही है, अगर वो री इन्वेस्टमेंट रेट कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एक्विटी से ज़्यादा है, तो कंपनी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी. और अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एक्विटी और कंपनी का री इन्वेस्टमेंट रेट बराबर है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कंपनी डिविडेंड दे या ना दे. और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर कंपनी का री इन्वेस्टमेंट रेट कम है, यानी कंपनी खुद से शेयर होल्डर के लिए जो रिटर्न अर्न कर सकती है वो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विटी से कम है, तो कंपनी के शेयर की वैल्यू नीचे चली जाएगी. लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल.
when all the earnings are paid as dividend and we assume that $0.8 dividend is paid and the equity's required rate of return is 20%, अगर सारी earnings dividend की शक्ल में दे दी जाएं तो हम पिछले मॉड्यूल्स में पढ़ चुके हैं, हम perpetuity यानी constant dividend model की बात करते हैं, and where the market price or the market value is equal to the dividend divided by the required rate of return. So if we divide 0.8 by 20%, we get the per share market value equal to $4. Now, let's take the second example where we say half of the earnings are retained by the company and the remaining is distributed. ये भी हम ग्रोथ मॉडल के अंदर पढ़ चुके हैं कि अगर अर्निंग्स रिटेन की जाएंगी तो उसके नतीजे में कंपनी की ग्रोथ होगी. And the formula that we have discussed is this one, that the market price or the value is equal to earnings into 1 minus the retention and divided by the cost of equity and the growth rate. Now, if we put in values that we have, that is $8 per share is the earnings of the company and 50% is retained, and then the cost of equity is 20%, and the required rate or the reinvestment rate is also 20%. You look at this formula, which is the growth rate formula, it gives us the same value, that is $4. So इसका मतलब ये हुआ कि अगर required rate of return on equity और reinvestment rate बराबर हो तो dividend दिया जाए या ना दिया जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता. तीसरे एग्जाम्पल के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर reinvestment rate ज़्यादा हो, कंपनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ एक्विटी से ज़्यादा पर इन्वेस्ट कर सकती हो तो क्या होगा? Let's have a look at this. We are using the same formula, but if you look at this formula, you would see that the reinvestment rate of the business is 30% and not 20%. And if it is so, you can see that the value of the share has gone up from $4 to $8. In this case, the share price rises. And the last option is that if the company is reinvesting, but the reinvestment rate is less than the required rate on equity, you can see that if the company will follow, will retain the amount of profit, it would result into decline in the value or the market price of the share. And you can see that in the formula, when we put in the values, the 10% is the cost of or the reinvestment rate and 20% is the cost of equity, and we get the value reduced to 2.67. So summarizing this whole discussion of the module, we say that there is some criticism on the irrelevance theory, but along with that criticism, we have also seen that the only possibility or the only reason for a firm to retain profit should be when they can earn more than what the equity holders require by not giving them dividend.